Thank you. It was that bad. Third paper, not able to stand on my feet. Huge fight with one. Like first time our sections got divided. मेरी कई सारी दोस्तियाँ my college fest. Something crazy happened again. कॉलेज में there will be a lot of people. अभी तो मुझे सोच के हंसी आती है. I think I found a great friendship. Honestly भाई मैंने भाई welcome. It is time for that video that I don't know how many of you guys wait for, but I wait for this video throughout the year. It is time for our 2025 recap. But before I go straight into the video, I just want to tell you that thank you for being here. Thank you for being with me. And thank you for being in this community that I'm trying to build. 2025 is over and this is our tradition. ये tradition बन चुका है अभी because I've made I think 4 videos like these. Like I'll put the videos here, you can see. And I have made it a tradition now. So of course, how was my 2025? So last year I categorized this video into various categories like academics, health, relationship, other decisions and all of that. But this year I'm not gonna do that. Let's change it up a bit. So this year what we're gonna do is basically I'm gonna go month by month. I'll start from January and then I'll go till December. And I have no script, I have no writings, I have no list, I have nothing for this video because at the end of the year, this is that one video जहाँ पे मुझे कुछ सोचने का मन नहीं करता. I just want a raw and real video for you guys. So this is that video. January से start करते हैं guys. Very hellish month for me. January was, I don't even want to say that word, but -3, -4, -5 out of 10 because it was that bad. So New Year's was okay. I used to live in a PG. If you don't know yet, I used to live in a PG for my first sem of college. फिर जो कंत मची January में basically उसी की वजह से I don't live in a PG anymore. First of all, my sem exam, my first sem and sems were in January, and it was starting from 3rd of Jan. I remember the dates in too detail because of course. So my New Year was okay. I was like very happy. I also have a YouTube shorts. Though I was alone in my PG and my roommate was not there because her exams are over and she went home. So I was alone and I celebrated. I video called my cousins. I talked to my friends, my mom, dad and all of that. उसके बाद 3rd Jan से मेरे पेपर स्टार्ट हुए. I had 3 papers. First paper was okay, done. Second paper was okay, done. Third paper जिस दिन था मेरा, I felt so sick that I had to get hospitalized. I don't know how many of you know, but again, I have diabetes. I'm type 1 diabetic. 13th को मेरा था last paper, third paper, basic electrical का, and I felt very sick. I felt super sick. My roommate actually came back, but that night she went to a friend's place. So she was not there when I actually felt sick. So I called her and I was like, "Behan, come back. I'm like gone." And subah ko she immediately came back and she bought so many medicines for me. I talked to my dad and I was like, मैं ऐसे हालत में थी कि for the first time in my life I was like मैं एग्जाम नहीं दे पाऊँगी. क्या हुआ कि मैंने पापा को बोला कि can you please just talk to my mentor or anything because I don't think I can give the exam. मैं उठ ही नहीं पा रही थी. Started vomiting and somehow मैंने medicine लेके I went to give my exam and somehow I wrote something and then I was just like I was not able to write. I was just sitting with my head down. After that I came back to my PG and I was like मुझे घर जाना है, मैं कुछ नहीं कर सकती. And I even told my roommate कि तू पैक कर दे मुझे because मैं उठ नहीं पा रही हूँ. Then उस रात को I vomited for around maybe 30 times or something. I'm not exaggerating, trust me. सुबह होते होते we went to the local doctor. I was not able to stand on my feet. The local doctor said that she has to be hospitalized. So I was hospitalized and I was there for 2.5 days जिसमें मेरा बर्थडे भी था. तो my last year's birthday was also, sorry not last year, this year's birthday was also in a hospital. हुआ था मुझे ketoacidosis which is due to diabetes. Of course my sugar level increased a lot क्योंकि वहाँ पे खाने वाने का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था. And when my roommate was not there उस टाइम पे तो और ज़्यादा चल रहा था because I can't really cook a lot. ठीक है, but then I got back. उसके बाद
एंडिंग ऑफ जनवरी की बात करें, वाई आई एम सेइंग दैट जनवरी इज़ द वर्स्ट मंथ दिस ईयर, बिकॉज सो मेनी थिंग्स हैपेंड. I came back to home and something happened personally. Like, I can't go into details of that, but it was something like, it was a huge fight with one of my friends, very close friend, very close. And I was at the wrong position, मतलब गलती मेरी थी उसमें. So उसके पीछे गया मेरा 3-4 दिन, and then I fixed it, but it was a really bad phase. और ऊपर से तुम सोचो, मैं बस वापस आई हॉस्पिटल से, and उसके बाद वो सब हुआ. That was my January. So yeah, let's talk about February. Feb में I fell sick again. Feb में I fell sick again. It was food poisoning. I again remember the date. It was 6th of February. And really bad food poisoning हुआ था, really bad. 3 दिन मैं उसमें सफ़र करी, and then I finally got well. Feb में I had an event in my college, and that was a very good memory. So first year में for the first time I was like volunteering in a event of my club. ठीक है, जिसका भी मैं बहुत core part बन चुकी हूँ. I'm happy, but that was the first time and I was very like scared, and I was like मुझे करना क्या, मुझे honestly कुछ नहीं समझ आ रहा था, बहुत confused थी. But first years के ऊपर उतना काम नहीं होता है. So it went well. It was a 2-day event. I also had doctor's checkup and all of that. I think that was it. Feb में और कुछ उतना मुझे याद नहीं है. जितना मुझे याद है मैं वही बोल रही हूँ. Like I said, it's a very real video, so I've not listed down all the things. मुझे जितना याद है. So Feb को मैं दूँगी probably 1. Cut to March. March में मुझे ऑनेस्टली उतना कुछ याद नहीं है मार्च में क्या हुआ था. मार्च वॉज प्रिटी न्यूट्रल. माई सेकेंड सेम वॉज स्टार्टिंग, एंड आई वॉज नॉट लाइक, आई डेंट गो बैक टू पी जी, एंड आई वॉज क्रैमिंग कि मुझे पी जी वापस जाना है, बट माई पेरेंट्स डेंट लेट मी बिकॉज दे वर वरीड ऑफकोर्स. मैं घर से भी उस टाइम पर ट्रैवल नहीं कर पाती थी बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू लाइक ट्रैवल अलोन एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो उतना डिस्टेंस. सो व्हाट आई वाज डूइंग वाज, मैंने सेकेंड सेम के पहले कुछ दिन आई जस्ट डिडंट गो टू कॉलेज. माय डैड टॉक टू माय मेंटोर, एंड उन्होंने ये सब बोला कि आई एम सिक एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आफ्टर दैट आई वाज गोइंग बाय माय होम का माय ओन, मतलब घर के कार में. मार्च वाज प्रिटी, yeah, so I'll give it like a 2, like 3, 4 something, because it was not bad. So 3, 4. April was also again very neutral month. April में I think वो कब हुआ था, April में हुआ था probably, I don't remember. So we had English class, a very silly thing, but मेरे लिए बहुत fun था. So we had a English class, हमारी English class होती थी second sem में, and we had to do a role play. And after like first sem our sections got divided, okay. एंड सारे नए लोग थे, सारे नहीं, कुछ नए लोग थे, एंड वी आर नॉट रियली यूज टू बीइंग फ्रेंड्स विद देम. सो दैट वाज अ वेरी गुड चांस फॉर अस टू इंटरैक्ट. तो एक रोल प्ले करना था हमको, 5-6 स्टूडेंट्स, हम लाइक ग्रुप वाइज, एंड दैट वाज अ रियली फन कोर मेमोरी फॉर मी. मुझे पता नहीं उनके लिए कितना था, बट मेरे लिए वो बहुत एक फ़न मेमोरी था, एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन दिस वीडियो. भाई मेरे को बहुत मज़ा आया था उस रोल प्ले में, एंड वहीं से मेरी कई सारी दोस्तियाँ स्टार्ट हुई. So I think yeah, it was a pretty fun memory. I think that was April or May something उस time पे ही. I don't exactly remember, but yeah. So I'll give it like a 5 or 6 maybe. May was my college fest का month. You won't be able to know why I'm smiling क्योंकि मैं details में तो नहीं जाऊँगी, but I'll tell you. So May में था हमारा college fest, annual fest, and I participated in a fashion show, and I participated in a poetry competition. Very two sides of the spectrum kind of thing, I get it, but मैं वैसी हूँ, मैं थोड़ी हूँ versatile. So I participated in a fashion show for the first time in my entire life. मैंने कभी नहीं करी थी, but मुझे पसंद है बहुत. एंड पोइट्री जो थी वो बेसिकली थी कि आई राइट पोएम्स. सो उसी को मैंने रिसाइट किया. सो अगैन अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी कि मैंने पहली बार अपनी लिखी हुई पोएम टीचर्स के सामने, सबके सामने रिसाइट करी. इट वॉज अ वेरी गुड मेमोरी. एक सिंगर आया था, सो कॉन्सर्ट एंड ऑल ऑफ दैट. सो द फैशन शो, प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, इट वॉज अगैन अ वेरी फन मेमोरी, बट थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था मेरे लिए क्योंकि तभी मैं यूज टू नहीं थी ट्रैवलिंग उतना ज़्यादा डिस्टेंस. सो थोड़ा बहुत मुश्किलें हुई थी, बट अगैन आई पुल्ड इट ऑफ. ऑफ कोर्स आई ऑलवेज डू. तो वो बहुत मज़ा आया था. फेस्ट के दिन समथिंग क्रेजी हैपेंड अगैन. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉलेज एडवाइसेस को लेके. उसमें मेरा एक पॉइंट था कि कॉलेज में देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल इनवाइटिंग यू इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऑफ कोर्स डोंट कैंसल प्लान्स, एन्जॉय करो, बट think
twice before you say yes to things, yes to plans. Think a little bit before you join a plan or join a few people to go somewhere or something. But it was not a good experience. अभी तो मुझे सोच के हंसी आती है बहुत ज़्यादा, but उस time पे it was not a good experience. So yeah, so I'll give it like a 7.5 maybe, not more than that. जून जुलाई अगस्त आई डू नॉट रिमेंबर एनी थिंग दैट हैपेंड. जून में तो हमारा सेम एग्ज़ाम था आई थिंक, जून या जुलाई में. एंड सेकेंड सेम में मेरा GPA भी अच्छा आया था, लाइक फर्स्ट वाले से बेटर था, सो आई वॉज हैप्पी. अगस्त में था हमारा समर आई टर्न्ड प्रिटी. So Summer I Turned Pretty came out season 3 and मुझे actually like season 3 था या season 4, season 3 था right. So was so excited क्योंकि मैंने ना पहले 2 seasons उसी साल देखे थे, so I was right on time. I was so obsessed with it. People who know me know it. So yeah, it was good enough. I think 7.5. September, October, November, December. A lot of things happened in Durga Puja as well because I never really enjoy that much. Durga Puja के पहले, by the way, I had a very cute outing with one of my friend's house, my best friend's house actually. तो वहाँ पे हम कुछ 4 लोग मिले थे and हमने बहुत मज़े करे थे उस दिन. So that is one of my highlights for this year. October में like I said दुर्गा पूजा था. दुर्गा पूजा में I had fun. Next Kali Puja में भी I had fun, but again something happened. Like I meet my cousins for Kali Puja, for Diwali. I go to this one of my grandfather's house and वहाँ पे हम सब लोग मिलते हैं, हमारा एक reunion होता है. That was also pretty great, but कुछ चीज़ें हुई थी because of which I was sad after I came back. एंड बस या उससे ज़्यादा कुछ मैं डिटेल्स में नहीं जा पाऊँगी. आई एम सॉरी. ऑल्सो आई फॉरगॉट टू से मार्च में मैं घूमने गई थी फॉर अ टूर, जिसका व्लॉग भी है मेरे चैनल पे, डूअर्स व्लॉग. सो या दैट वाज आल्सो वेरी फॉन्ड मेमोरी ऑफ माइन. दिसंबर में इट वाज अ लॉट ऑफ फन क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम me and one of my friend and second year से हम लोग second years together we organized freshers for our juniors which was a great memory. ठीक है, मेरी एक friend है रितिका, so she and like her and me we like co-headed, क्या बोलते हैं उसको, like हमने बेसिकली पार्टनरशिप करके वी रियली ऑर्गेनाइज दैट इवेंट प्रिटी वेल. और हमारे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने हेल्प किया. So yeah, it was a great memory. She also has a YouTube channel by the way. I'll put the username and the link in the description. And I connected with her a lot in December. मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी because मैं जैसे सोशल मीडिया करती हूँ, मैं जैसे कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, a lot of my friends do not get that because of course that's normal. I mean that's fine because सब लोग नहीं करते हैं तो, but she does because she is also into content creation and मुझे एक अलग connection feel होती है. So I feel really great कि हमने साथ में काम किया, वो सब organize किया. So it was a great memory and I think I found a great friendship. So win-win. And yeah, that's how my year ended. भाई मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? मेरे को सोचने दो. I don't think I'm forgetting anything. मतलब मैं कुछ तो भूल ही रही हूँ of course because मैंने उतने डिटेल में कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ भाई, कुछ महीनों की चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ. But I've told you how my years went, how my months went, and if I had to choose a month out of like honestly भाई मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बोलूँगी, but I think December was the funnest month in this year. I did not expect that bhai, but yeah. Oh, also I forgot guys, I went to just jumping this year. I think in November. भाई it was such a fun day. मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी घूमी हूँ ऐसा, like at least I think 2-3 बार तो घूमे, हाँ 3 बार I think. एक we went to a bookstore, we went to just jumping and कुछ दिन पहले I went to eco park. So I think yeah, honestly my second half was pretty good. Second half was better. Okay, never mind, 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई लव यू ऑल अ लॉट. भाई जितने भी हो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. ऑल्सो आई थिंक ऐसे याद आ रहा है मुझे, आई हिट 1000 सब्सक्राइबर्स. आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज भाई मैंने 5-6 साल लगाई है इस चैनल पे एंड आई नो कि 1000 इज़ नॉट दैट.
ठीक है, 5-6 साल के हिसाब से, बट आई वॉज सो हैप्पी कि एटलीस्ट इट पेड ऑफ अ लिटिल बिट. सो या आई एम वेरी 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 हैप्पी. एक और वीडियो आएगा बिफोर 2025 ends होपफुली, विच विल बी द विजन बोर्ड का वीडियो, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. ओवरऑल 2025 was a memorable year, better than the last few years. And भाई मेरी दीदी की शादी भी हुई थी इस साल. मेरी दीदी की शादी हुई थी नवंबर में. It was also a pretty memorable event. That's it. I'll see you guys in my next video. Bye.